Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Organic Chemistry by Aleena. So today we are going to see how we can draw resonance structures or contributing structures. Resonance structures are known by different names. First, I already told you contributing structures. You can also call resonance structures as canonical structures or canonical forms. Okay, so for practice I have taken these 8 questions. I'll teach you how to draw resonance structures or canonical forms of these 8 structures, and I hope you will understand all the steps taught in this video. Okay, so let us not waste much time and start with our questions. Okay, first, all these questions belong to one type of delocalization. I hope it is very vivid from observation of these 8 structures, that is, they belong to pi sigma pi type delocalization, right? 1 pi bond, sigma bond, pi sigma pi. Okay, this is alkyne bond. Okay, so this is also pi sigma pi type, this is also pi sigma pi type, and all the other structures are also, they belong to pi sigma pi type delocalization. This is the first case that we discussed in the previous video, which was only the introduction to resonance. Today we will see how we deal with resonating structures. Okay, how you draw the resonance structure, let us know about the rules that you have to keep in mind while drawing them. Okay, so there are other rules also, but these are the most important rules that you have to keep in mind while drawing contributing structures. Okay, so the first one says all contributing structures must be valid Lewis structures. Okay, all the structures must be valid Lewis structures, that is, nitrogen cannot have a covalency more than 4. Okay, beyond 4 nitrogen should not have a covalency. Okay, and also carbon should not have what? Carbon always prefers to form tetravalent compound. It cannot have less than that or more than that. Okay, except in case of carbocations. Okay, while drawing contributing structures, this is CS means contributing structures, do not shift any atom from its position. Relative position of each atom remains same. Okay, suppose you have CH3, CO and CH3. Okay, this is one structure and this is another structure. Okay, and a question is being asked whether these two are contributing structures or not. If you see here, we had 3 hydrogens, but here we have 2 only. One hydrogen has shifted from here to this oxygen. Here we had a carbonyl oxygen without any hydrogen. So the position of this hydrogen has been shifted, is different in this structure and in this structure. So these are not contributing structures since the position of hydrogen has changed in this structure. Okay. So while drawing resonance structures or contributing structures, always remember that the position of each atom remains same. Okay, only you have to shift the position of electrons. Okay, you should not shift any atom from its position. This is very important. Okay, if there is a choice available in moving electrons or a pi bond, always move the extra charge towards more electronegative element. Okay, this is a very easy thing. You know that an electronegative element is better able to accommodate a negative charge or extra electrons. Okay, so always while moving electrons, move the extra charge towards electronegative element because it is able to accommodate that negative charge easily. Okay, so this is the first structure. This is benzene, nothing but benzene. So we have to draw resonance structure of this. The question says finally draw hybrids also. Hybrids are really important. The hybrid structure is the actual structure of these compounds. Okay, contributing structures are only the structures which contribute to the actual structure. Okay, the actual structure is between the contributing structure. Okay, सारे contributing structures का कुछ ना कुछ
कंट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तभी उनका नाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, और रेजोनेंस और कैनोनिकल फॉर्म. सो starting with benzene. Okay, so you already know benzene can be drawn. Benzene only has two resonance structures. Okay, two resonance structures or canonical forms. What are they? These pi electrons are here, here and here. If you shift these electrons, this pi bond goes here. Okay, this pi bond comes here and this pi bond comes here. So the other canonical form becomes this. Okay, so this canonical form and this canonical form, these are the two Kekulé structures in case of benzene. Okay, these are contributing structures of benzene, and the actual hybrid, this is the sign of resonance. Okay, you make the contributing structure with this arrow, double headed arrow. Okay, this does not mean कि ये structure इसमें इंटर कन्वर्ट हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब ये है कि the actual structure lies between this structure and this structure. Okay, it is not truly this structure and not this structure, it is between these two structures. And the actual hybrid is, hybridization के लिए you make this a 3 dash line. Okay, and draw the hybrid structure like this. अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं, जो साइक्लिक रिंग बना रहे हैं, ये तो वहीं पर है. पाई बॉन्ड इधर थी, you now draw the hybrid with dotted lines. पाई बॉन्ड इधर थी, बट इस केस में पाई बॉन्ड इधर थी, इस केस में इधर थी, तो थोड़ा पाई बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी था, इधर भी डॉटेड लाइन, फिर इधर भी थी पाई बॉन्ड, तो हियर ऑल्सो डॉटेड लाइन. देन दिस हियर you had a pi bond in this structure, so you draw the pi character using dotted line here also, and similarly here also, because दोनों structures के contribution से क्या हुआ, थोड़ा pi character इधर भी है, फिर इधर है, इधर है, इधर है और इधर भी है, तो a full circle of pi character is drawn. इसको आप ऐसे देख सकते हो. Okay, in case of benzene you draw the hybrid like this. This is the hybrid. Okay, this is the hybrid of benzene. Okay, the hybrid of benzene. Benzene actually looks like this, but हम benzene को ज़्यादातर ऐसे represent कर देते हैं only to show the contributing structure. Okay, this is the hybrid of benzene. Okay, usually we draw dotted lines, but in case of benzene there is no harm in drawing a full circle. Okay, a solid circle. So this is clear. Next question is this. What is the name of this compound? This is 1, 2, 3, 4 a diene of butane. Okay, so this is butadiene. Okay, butane 1,3-diene or butadiene, simply as you say. So here now see, अब क्या होता है, बेंजीन में तो साइक्लिक स्ट्रक्चर था, इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो कैसे करेंगे. नाउ दिस इज पाई सिग्मा पाई. यू नो इधर डिलोकलाइजेशन होगी जिसकी वजह से कुछ पाई कैरेक्टर इधर भी डेवलप होगा, तो यू ड्रॉ इट लाइक दिस. एरो हमेशा कहाँ बनाते हैं, एरो हमेशा बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ. ओके, यू ऑलवेज ड्रॉ एरोज इन organic chemistry from an electron rich center to electron deficient. The arrowhead points towards electron deficient center and starts from electron rich center. This convention is different from the arrowhead you draw in the arrow you had learned to draw in dipole moment. Okay, this is different from that. Okay, in all reactions and in resonance also, the arrow is always made from electron rich and ends at electron deficient. So alkene is electron rich as compared to this sigma bond, so this arrow is drawn towards sigma bond. Okay, electron rich to electron deficient. Okay, so ये pi bond जब इधर आएगी तो अब देखो अगर यहाँ पर pi bond बना दे तो इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड होगी, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो इस pi bond को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा. Okay, this pi bond shifts here, so the structure becomes, यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म, यहाँ पर आई, और जब यहाँ पर आई तो ये वाली पाई बॉन्ड जो थी इधर, दिस शिफ्टेड टू हियर, तो इधर क्या हुआ, इधर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ना, पूरे के पूरे पाई बॉन्ड हैड 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टू दिस कार्बन, एंड हियर विच
here this carbon had a pi bond which is not present now, so it has a lack of 2 electrons, a deficiency of 2 electrons, so it has a positive charge. Okay, so here you have charge separation. Okay, charge separation. Okay, this is a contributor of butadiene. Okay, अगर अब आप देखो ये ऐसे बना दिया आपने, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर आता है तो ये वापस इधर चला जाएगा, है ना, तो ये स्ट्रक्चर वापस इधर आ जाएगा. ओके, अब देयर इज अ क्वेश्चन कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ही क्यों मूव किया, हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या इधर से मूव नहीं कर सकते थे? वेरी वेल, यू कैन ड्रॉ इन केस ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, यू हैव अ चॉइस हियर, है ना. सो आप इस पाई बॉन्ड को भी शिफ्ट कर सकते हो, इस पाई बॉन्ड को भी शिफ्ट कर सकते हो. इधर शिफ्ट किया टुवर्ड्स द राइट, बट देयर इज नो हार्म इन शिफ्टिंग द पाई बॉन्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, तो अगर आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो तो क्या होगा, सॉरी, if you shift the pi electron density towards the left, so what happens, this pi bond shifts here and this pi bond has to shift here because to maintain the tetravalency. I told you na, all the structures should be, all the contributing structures should be valid Lewis structures. So a negative charge comes here, pi bond has shifted to this sigma bond, this becomes pi, and this, because this pi bond shifted here, there is no pi bond here now, so this has a positive charge. Okay, इधर लेफ्ट में पॉजिटिव था, राइट में नेगेटिव था, इधर लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव. सो बोथ these are resonance contributor of butadiene. The hybrid, what will be the hybrid? Now I am drawing hybrid with 3 dashed lines. Okay, so the basic structure remains same. सिग्मा बॉन्ड से ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहा. अब थोड़ा पाई कैरेक्टर इधर भी है. A little pi character is here also due to delocalization of these pi bonds, and a little positive charge is, sorry, a little pi character is here also. So the pi density is spread all over these 4 carbons. Okay, 4 carbons in butadiene. Okay, so you have drawn the resonance contributor, the hybrid structure as this. All right, this is the correct hybrid structure. Okay, up next you have this is the next structure. Okay, this is also pi, sigma and pi. Okay, up you have to draw the resonance structures of this. Let us see how we can draw. Just a second. Let us see how we can draw the resonance structure, contributing structures of this compound. Okay, now you have pi sigma pi type bonding here, and you can shift the pi electrons from this bond towards this carbon towards the right, and you can shift this pi bond from here to this carbon. But here you can see this structure is not made up of entirely carbon framework. Okay, this is not made up of carbon framework. Okay, here you have the presence of one oxygen atom also. This oxygen atom makes a little difference in drawing the resonance structure. How? I told you, if there is a choice. Okay, now there is a choice. ये pi bond इधर भी जा सकती है, ये pi bond इधर भी जा सकती है. Okay, the structure is not symmetrical. Let us see what happens when you move the pi electron density towards the left. Okay, so what happens? Oxygen being more electronegative, it pulls the pi electron density towards itself. So the first resonance contributor becomes this. Oxygen pulled the electron density towards itself, so this carbonyl group became polarized and oxygen has a negative charge. This carbon, as a result, acquires a positive charge. Now you have CH, double bond CH. Now this positive charge is not stable, so this is sp2 hybridized na. This pi bond comes here. Okay, so CH3 single bond here, O negative. Now this pi bond came here, so a double bond is created here, and CH
single bond. Now there is no double bond here. Okay, so single bond CH2, and since two electrons have moved from here to here, this carbon becomes electron deficient. Okay, so the positive charge from here has migrated to here because delocalization has taken place. Okay, so you get it how you have drawn the resonance contributors when you moved the pi bond from right to left. Okay, here you move the pi bond from right to left. Okay, now let us see what happens when you move the pi bond from left to right. Okay, let us see what happens. Okay, let me draw it with blue pen. CH3 double bond O, CH double bond CH2. Okay, now let's say this pi bond became polarized. Okay, CH3 double bond O, CH. Now this pi bond has shifted here, so this becomes electron rich, right? So CH2 and a negative charge, and there is a deficiency of 2 electrons here because the pi bond has shifted completely to this carbon, so this carbon becomes electron deficient with a positive charge. To stabilize this positive charge, this pi bond shifts here. Okay, this is sp2 now, this is also sp2, so shifts here. When it shifts here, the structure becomes like this. This was a sigma bond. When this pi bond migrated here, this bond becomes a double bond, and here you have a negative charge as it is. And since oxygen was doubly bonded here, and oxygen is not doubly bonded here, it is a single bond now, and oxygen has lost its share in the pi bond, so oxygen gains a positive charge, right? ऑक्सीजन के पास यहाँ पर पाई बॉन्ड थी, बट अब इधर सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गए नहीं, ऑक्सीजन से दूर गए, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ गया ना. जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उसके पास पॉजिटिव आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके पास नेगेटिव. यही चीज आपने इधर देखी. अब यू टेल मी, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? इधर ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है. कार्बन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, कार्बन के पास इधर पॉजिटिव चार्ज है. इधर कार्बन जो कि ऑक्सीजन से काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही समझो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, बट ऑक्सीजन हियर हैज अ पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन हैज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज नॉट स्टेबल. ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अपने पास रख नहीं सकता, ये अनस्टेबल है. दिस इज मोर स्टेबल. A positive charge on an electronegative element is not stable. A negative charge on an electronegative element is. Okay, I told you na here while writing the rules. This the third one. If there is a choice available in moving electrons or a pi bond, always move the extra charge. Extra charge means negative charge or a pi bond towards more electronegative element. Okay, always. Okay, so this is the more stable contributing structure than this. और of course ये भी contribute करेगा इसके हाइब्रिड में, but जितना ये contribute करेगा उसके कंपैरिजन में इसका contribution काफी कम होगा, और इसलिए इसका भी, क्योंकि ये contributing structure इसी प्रोसेस से बना है. ओके, और ये contributing structure इस process when a doubly bonded oxygen shifted pi bonds towards itself, then you get a more stable structure. Okay, so now let us see how you can draw the hybrid of it. Okay, अब hybrid बनाने की बारी आई है, तो hybrid कैसे बनाएंगे? First a 3 dashed symbol, so you will draw the basic structure of it. Okay, oxygen CH single bond CH. Okay, जो पाई बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं, अभी मैंने उन पाई बॉन्ड्स को नहीं बनाया. अब पाई कैरेक्टर इधर से मूव हुआ तो यहाँ से बॉन्ड टूट रही है, राइट? द बॉन्ड इज ब्रेकिंग फ्रॉम हियर ना, और शिफ्टिंग यू कैन से. सो हियर आई एम ड्रॉइंग अ डॉटेड लाइन हियर. ओके, दिस वाज अ सिग्मा बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, बट दिस सिग्मा बॉन्ड इज नॉट प्योरली सिग्मा, इट हैज सम पाई कैरेक्टर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. सो इधर भी थोड़ा पाई कैरेक्टर है, तो आई एम ड्रॉइंग इट विथ डॉटेड लाइन्स. इसको आप ऐसे देख सकते हो,
ये पाई बॉन्ड यहाँ से खत्म हो रही है, पाई कैरेक्टर इधर डेवलप हो रहा है. सो ये थोड़ा जा रहा है, ये थोड़ा इट इज कमिंग हियर. ओके, पाई कैरेक्टर इज कमिंग हियर, पाई कैरेक्टर इज वैनिशिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, अब इधर देखो, इधर पाई बॉन्ड पहले प्रेजेंट थी, थोड़ी गायब हुई. ओके, इधर से इट इज एब्सेंट. सो अगेन डॉटेड लाइंस. ठीक है, अब देखो क्या इसमें हाइब्रिड इतना ही कंप्लीट है? द हाइब्रिड इज नॉट कंप्लीट हियर. आप इधर देखो अगर, तो इधर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन. दिस कार्बन इज स्लाइटली इलेक्ट्रॉन deficient and oxygen is slightly oxygen has a slight electron access to it. Okay, so here you draw a negative charge, here you are drawing a positive charge. But what type of positive and what type of negative? Of course they are partial charges. Okay, this is the method you use to draw hybrids. Okay, so this is the hybrid of this structure. Okay, now I have not drawn a partial positive here and a partial negative here. Okay, हाइब्रिड तो पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन तो इसमें भी ऐसे ही होनी थी, बट चार्जेस इसमें उल्टे हो जाते, इधर पार्शियल पॉजिटिव बनते, इधर पार्शियल नेगेटिव. मैंने इधर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन और कार्बन पर इसलिए दिया क्योंकि ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर मोर स्टेबल है. जितना रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर ज्यादा स्टेबल होता है, उतना ही ज्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाइब्रिड में. ओके, द मोर the stability of a contributing structure, the more it contributes to the hybrid or the actual structure. Okay, so since this was more stable as a contributing structure than this, hence I have drawn the partial charges corresponding to this structure. Okay, अब if you have a question, जो कि आएगा ही, कि इधर हमने क्यों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाया था, क्योंकि इफ यू सी हियर, यहाँ पर कार्बन ही था जिसके पास पॉजिटिव है और कार्बन ही था जिसके पास नेगेटिव है, और वो भी सेम पोजीशन वाले. इफ यू नंबर इट 1 2 3 4, तो फर्स्ट के ऊपर ही पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट के ऊपर ही नेगेटिव, इधर फोर्थ के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, और इस केस में फोर्थ के ऊपर पॉजिटिव. और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सेम है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि कार्बन ही है. और कोई, ये दोनों इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिंस देयर इज a pure carbon framework in this structure. दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पार्शियल चार्जेस नहीं बनाए. ओके, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है और दोनों ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, दे कंट्रीब्यूट इक्वली टू द हाइब्रिड, हेंस वी हैव नॉट ड्रॉन पार्शियल चार्जेस हियर. ओके, बट हियर अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जा रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिस एंड दिस. अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये आ रहा है और ये. ऑफ कोर्स ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में काउंट होगा. अगर आप ऐसे काउंट करो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज विल बी 1 2 3 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. एंड हियर इफ यू गो 1 2 3 3 अगेन हियर. ठीक है, तो टोटल अभी मैंने कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए? 1 2 3, इसको तो ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो 4 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, और सबके सब कंट्रीब्यूट करेंगे, बट मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी these will be the major contributing structures, these will be only the minor contributing structures. तो इसलिए हमने पार्शियल चार्ज सेपरेशन बनाया, क्योंकि ये दोनों एक तो सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है, सेकेंड you have a choice, and when a choice is given you always move the electrons towards more electronegative element to get stable contributing structures. Now moving on to the third one, here you have pi, sigma, pi. Okay, a triple bond is made up of two pi bonds. Only one of them delocalizes. Okay, always remember, only one pi bond delocalizes, the other behaves as a localized bond. Okay, remember, अगर ट्रिपल बॉन्ड होती है, ओनली वन बॉन्ड कैन delocalize itself. delocalized bond, this bond behaves as a localized bond. दोनों बॉन्ड्स, ऐसा नहीं कि दोनों बॉन्ड्स हमारी डिलोकलाइजेशन में हेल्प करेंगी, ओनली वन बॉन्ड, इन दोनों में से कोई सी भी बॉन्ड पर सिर्फ एक डिलोकलाइज हो सकती है, द सेकेंड वन रिमेन्स लोकलाइज्ड. ओके, सो नाउ लेट अस सी. Now if I'm moving from left to right, okay, so I'm moving from electron rich to electron deficient. Here you have more electron density na, so arrow is drawn from here, electron richness, electron rich center to electron deficient. When this pi bond shifts here,
द कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो द कोवेलेंसी क्या है 1 2 3 4 4 है. अगर इधर पाई बॉन्ड में बना दूंगी इस पाई बॉन्ड को बिना शिफ्ट किए तो द कोवेलेंसी विल बी exceeded by 1. Okay, it will become 5 and it won't be an appropriate Lewis structure. So the first rule will be violated. So I have to move this pi bond. इसलिए मैंने pi bond shift की. अब इधर 3 bonds में से you are left with only 2 bonds. Here you have another pi bond and here you get a negative charge. All right. And since this pi bond has shifted from here to here, इस कार्बन के पास एक लैक हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स की. दिस acquires a positive charge. All right. If you see, can you tell me the hybridization of it and just tell me if I have drawn the correct structure of this, the bent structure. Just tell me ये bent होगा कि नहीं. If I calculate the hybridization of this carbon, then what will it be? So I'm calculating steric number or Vesper count or number of hybrid orbitals. So I have number of sigma bonds. 1 sigma bond, second sigma bond. These two are pi. So 2 sigma bonds. And is there any lone pair? No lone pair. So 2 plus 0, 2. And 2 means sp hybridized center and a linear structure. Okay. So this is a type of alene. I told you what alenes are in the first video. So this is like this. Okay. So this has to be linear. And here I have drawn incorrect representations because I have made it angular. Okay. So it is better to draw this contributing structure like this. Double bond, carbon, double bond, and here there is a carbon with hydrogen and here you have CH2 with negative. Okay. Or you can draw the condensed structure as well. See, double bond, single bond and a negative charge. Okay, this is the contributing structure and of course a positive charge here. Okay, this is one contributing structure. The second contributing structure will be what? It will be, आप इस इधर देखो, अगर नेगेटिव चार्ज वापस इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड वापस उधर चले जाएगी ना पॉजिटिव की तरफ, राइट? सो the second contributing structure will be, here I have drawn from left to right. Now if I draw from right to left, what will it be? Okay, is it possible from right to left? Let us see. Okay, I'm moving this pi bond towards this center. Okay, अगर मैंने इधर मूव किया तो here you have a carbon, right? This triple bond has a carbon. This takes up its electrons. This takes up electrons of this pi bond and becomes negatively charged, right? And double bond is there. Now again you have an alene center, sp hybridized linear structure, and then you have a single bond and a positive charge, right? जब इधर से पाई डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट हो गई ना पॉजिटिव. इधर जब नेगेटिव शिफ्ट, इधर जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नाउ टेल मी विच इज मोर स्टेबल, a positive charge here or a positive charge here? Okay, this is a question. Just see which one will be more stable and which one will not be. Okay, this is a homework, you have to think about it. Okay, I'll tell the answer in the next video. Okay, or a YouTube short probably. Okay, now you have this structure. This is nothing but benzaldehyde. Again you have pi, sigma, pi type delocalization here. बट इधर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स पुल करे या फिर इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में दे दे. ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर what happens, what did I tell you earlier? If there is a choice, then always the electrons move towards more electronegative element contributing as the major canonical forms. So when this
these pi electrons are shifted towards oxygen first. इसके contributing structures के लिए सबसे पहले याद रखो ये pi bond पहले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है. ओके तो फिर क्या होता है? What happens next? This becomes a sigma bond, a negative charge is here, and this becomes a carbocation. Okay, a positive charge is developed here because the pi bond density has shifted towards oxygen. अब इस pi bond को stabilize इस positive charge को stabilize करने के लिए यहाँ पर एक double bond present है, एक pi bond present है. So this shifts here. ठीक है, तो क्या होता है? This is the next contributor. Now when this pi bond shifts here, a pi bond is created here and this becomes a single bond. This pi bond is here, this pi bond is here, and a positive charge is created here because this pi density has shifted here, so this becomes electron deficient. Alright, now to stabilize this positive charge, this pi bond shifts here. Okay. Now to stabilize this positive charge, this pi bond shifts here. Okay. Now this sigma bond becomes a double bond and here you get a single bond created and this structure remains as it is, this part remains as it is, this double bond remains as it is, and a positive charge has shifted from here to here now. Okay. To stabilize this positive charge, this pi bond comes here. Okay, to give rise to another contributor, which is this. A pi bond is created here, a pi bond here, and a positive charge here. Okay, double bond, single bond, O negative and H. Okay, now again you draw the next contributor as, next contributor क्या बनेगा? अब यहाँ positive charge है और यहाँ double bond है, right? Pi sigma positive. तो अब ये pi bond, अब आप कहाँ से बनाओगे इलेक्ट्रॉन एरो? इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ओके, ये इधर कब आता है? जब ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस इधर दे देता है. ऑक्सीजन ने जो पाई डेंसिटी अपनी तरफ पुल की होती है, इट गिव्स द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक टू द कार्बन एंड दिस पाई बॉन्ड goes to the positive charge to neutralize it, and this sigma bond becomes pi bond. Here we have a pi bond, here we have a pi bond, and again you get the aldehyde back in picture. Okay, all these are contributing structures of benzaldehyde. Okay, all these are contributing structures of benzaldehyde. In benzaldehyde you can very well see the pi sigma pi type delocalization, और pi sigma pi के अंदर ही you have pi sigma positive charge. Okay, pi sigma positive charge. In all these structures you have pi sigma positive charge in all these structures, 1 2 3 4, and 1 2 3. Here you have a pi sigma negative also, a pi sigma negative also. Okay, in one of the structure you have pi sigma negative also. ठीक है, इनके बारे में about these two type of delocalization we will take up different questions in a different video, not in this one, and in there in that video we will discuss specifically about the other type of delocalization. This video is reserved for pi sigma pi type only. Okay, so now we are left with drawing the hybrid of benzaldehyde. So the hybrid will be, let us draw the hybrid. The basic structure remains as it is. What is the basic structure? A 6-membered ring, because these pi bonds are oscillating. Okay, these do not have a fixed position. Here you have single bond, here you have a single bond with hydrogen, here you have a single bond with oxygen. Okay, now these pi bonds are shifting. Okay, shifting where? Across the ring. Okay, इधर भी pi density है, इधर भी pi density है, इधर तो pi density थी. Okay, इधर देखते हैं. I have drawn with dotted lines. Now next you have a pi density here also. Okay, so let us join this dotted line through this bond also. Okay, now next let us see what's the status of this bond. Okay,
This bond is also a double bond. You have a double bond character development here in this structure, here in this structure. So a double dotted line showing pi character development comes here also. Similarly, in this bond, you have a pi bond. You can see a pi bond is here. So you draw the pi character here. इधर भी है तो पाई कैरेक्टर इधर. ये तो सिंपल बेंजीन रिंग की ही सर्कुलर मोशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स की. सो अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज देयर ओवर दिस रिंग. अब इस बॉन्ड की बात करते हैं, इस सिंगल बॉन्ड की. क्या इस सिंगल बॉन्ड में किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड क्रिएट हो रही है, पाई कैरेक्टर डेवलप हो रहा है? इधर हो रहा है, इधर हो रहा है एंड इधर भी है. ओके, सो डॉटेड लाइन से आप इधर भी बनाओ. अब हाइब्रिड्स में अब कोवेलेंसी का ध्यान मत रखना. ओके, डोंट थिंक अबाउट कोवेलेंसी हियर, क्योंकि अब इधर देखो तो इधर तो कोवेलेंसी कार्बन की कुछ अलग ही हो रही है. ओके, 4 थोड़ी रह रही है. सो इधर आप ध्यान नहीं रखोगे हाइब्रिड बनाते हुए. द रूल ओनली अप्लाइज टू व्हेन यू आर ड्राइंग द contributing structures or canonical forms. While drawing hybrid, you don't think about that rule. Okay. Now, क्या इस कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड में कभी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ? No, not in this structure, not in this, not in this, and neither in these 3 structures. You have a double bond character development here. Okay. Now this oxygen and carbon bond, इसमें तो है ही. Okay, because in the first structure पोलराइजेशन तो इस पाई बॉन्ड की ही हुई ना पहले, शिफ्टिंग. ओके, फिर लास्ट स्ट्रक्चर में वो वापस दे रहा है. तो यहाँ पर तो हो गई हमारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डीलोकलाइजेशन. यू हैव शोन. Now let us talk about charge separation, because this is not a symmetric structure and there is a presence of a more electronegative element as compared to carbon. Okay, so of course there will be a charge separation. Charge separation कहाँ होगा? ऑक्सीजन के पास partial negative आएगा, because these all are the stable contributors. Okay, unstable contributor कब होता है? जब ये ऑक्सीजन रिंग की तरफ जा रहा होता, बट अभी रिंग से दूर आ रहा है. So this is partial negative. अब पार्शियल पॉजिटिव की बात करते हैं. अब पार्शियल नेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव भी होगा कहीं पर, क्योंकि चार्ज सेपरेशन सिर्फ नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ एनायंस में ही रह सकता है ना, ये तो न्यूट्रल स्पीशीज थी, तो पार्शियल पॉजिटिव भी होगा. पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? पहले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज वाज डेवलप्ड हियर. ओके, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन दिस कार्बन. सो दिस कार्बन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव. दिस कार्बन, ओके, दिस कार्बन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिंग कार्बन्स. क्या रिंग कार्बन में कभी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ? जहां जहां कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है वहां वहां आप हाइब्रिड में पार्शियल चार्जेस लगा दोगे. ओके, इधर पार्शियल पॉजिटिव था, सो हियर पार्शियल पॉजिटिव. इधर पार्शियल पॉजिटिव था, not on this carbon but this carbon, so partial positive is generated here and partial positive here also. So partial positive here. Okay, so partial पॉजिटिव चार्ज तो 3 जगह क्रिएट हुआ और नेगेटिव चार्ज इधर. अब वी आर टॉकिंग कि बेंजाल्डिहाइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नॉट दिस बट दिस इज द हाइब्रिड ना, तो हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. यू नो दिस वेरी वेल. सो अगर मैं बोलूं कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस इस ऑक्सीजन के पास है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन कार्बन्स के पास है, 4 कार्बन्स, तो क्या यहाँ पर से हमें कुछ रिएक्शंस के बारे में पता चल सकता है? इंफॉर्मेशन, यस, वी कैन रियली वेल डिड्यूस कि which place will be more reactive for electrophiles and which will be more reactive for nucleophiles. Electrophiles are electron deficient species ना. अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल को मैं बेंजाल्डिहाइड में डालूं तो which place is more susceptible to electrophilic attack? Of course इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले it will prefer to attack oxygen. अदरवाइज अगर मैं रिंग पर सब्सटीट्यूट कराना चाह रही हूँ किसी इलेक्ट्रोफाइल को, तो वेयर विल इट अटैक? पॉजिटिव चार्ज इधर तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ना ही इधर अटैक करेगा ना ही इधर अटैक करेगा, राइट. बट कहाँ अटैक कर सकता है? जहाँ पॉजिटिव चार्ज की जेनरेशन नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक हियर. ठीक है, तो अगर मैं अटैक दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे एरो बनाऊंगी, ओके, ना कि ऐसे, because electron rich to electron deficient. This is electron deficient, this was electron rich. या तो इधर अटैक करेगा और it will attack here. अभी चलो ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, we know that न्यूक्लियोफिलिक substitution बेंजीन नहीं देता, but this is not benzene, this is benzaldehyde. Okay, a COH group is here. Okay, तो ये न्यूक्लियोफिलिक substitution देगा कि नहीं देगा? ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक substitution दे सकता है. and where will it give the nucleophilic
Where will the incoming nucleophile attack? The incoming nucleophiles are electron rich species. तो electron rich है तो वहां तो जाएगा नहीं जहां electron richness already present हो. Oxygen पर तो attack नहीं करेगा. Let us talk about ring carbons. Okay, ring carbons. Okay. So if it has to attack somewhere, तो एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में उसके पास प्रेजेंट है, वो अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी ज्यादा हो. इट विल अटैक ईदर हियर और हियर और हियर. ओके, इन तीनों पोजिशंस पर. इधर इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक कर रहा था बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स रिपल्शन. ओके, हियर नेगेटिव चार्ज इधर अटैक कर सकता है, इधर अटैक कर, सॉरी, नेगेटिव चार्ज इधर अटैक कर सकता है, इधर अटैक कर सकता है, इधर अटैक कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट today's class. I hope all these structures were clear. Let us meet in part 2 of this video, which will be a continuation to this part. Okay, we will solve the other questions of this pi sigma pi type delocalization only. Okay, so thank you for watching. I would like to request you all to please subscribe to my YouTube channel and give me a feedback of videos, and if you want any improvement, kindly comment in below. Thank you so much. Please share this video to people who need a brush up of it or are starting with resonance. And yes, please like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.